हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आशा कर रहा हूँ आप लोग सबको मस्त होंगे। और मस्त होने का रीज़न भी है क्योंकि मार्केट जो है वो अभी मस्त है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे, सीधा काम में लग जाते हैं। आज चर्चा करने वाले हैं कि अभी मार्केट जो ऑल टाइम हाई लेवल पे है, इस मार्केट में क्या करना चाहिए और कब मार्केट रिवर्स कर सकता है, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। और फटाफट बुलाते हैं अपने चार और गेस्ट को। माय फेवरेट्स, लेट देम बी ऑन स्क्रीन। शोरोदीप, चेतन भाई, अभिजीत दा एंड सनंदो। हेलो 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 गाइस। गुड चलो इवनिंग। काम में लगते हैं। फटाफट गाइडेंस बताइए, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। मैं एजेंडा डिफाइन कर देता हूँ। शुरदीप, आप बताइए अभी का क्लासिकल चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है और मार्केट कहाँ तक दिख रहा है। आपका प्रिडिक्शन निफ्टी 20,000 एकदम सेटैक था। इट हैज रीच दैट लेवल। नाउ यू हैव टू टेल मी वेयर इट इज एक्सपेक्टेड टू गो। चेतन भाई, ऑप्शंस ट्रेडर को अभी क्या करना चाहिए, बाइंग सेलिंग या कैसे मार्केट को टेक केयर करना चाहिए। अभिजीत दा, रिस्क मैनेजमेंट कैसे संभाले, बिकॉज पैसा मन कर रहा पूरा का पूरा डाल दे सिस्टम में, विच इज नॉट लॉजिकल। पर आप बताएंगे कि कैसे अभी अपने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को बेटर रखें। और सनंदो, आप बताएंगे रिवर्सल कब खेलना है, बिकॉज यू आर ट्रैकिंग एफएक्स कमोडिटीज और आपको सबसे पहले पता लगेगा जब मार्केट रिवर्सल का सिग्नल देगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट सीक्वेंस। शुरदीप, ओवर टू यू। चलिए बताइए क्या आपका व्यू Hi, बन रहा है। sir. So I'm trying to share my screen. Can you see my screen? एक मिनट लगा देते हैं इसको, स्क्रीन को। ऐसी क्या बात है, हाँ लगा दिया, चलिए। Yes. So right now, हम लोग जब लास्ट सेशन हम ले रहे थे, तो लास्ट मंथ वी वर डिस्कसिंग दैट टाइम दैट निफ्टी वाज yet to break above this 18,900. And the moment it has broken above this 18,900, the ascending triangle kind of the classical chart pattern it created, it have a clear target of around 22,500, right? Now, I like this kind of setup when RSI sustains in the weekly time frame, RSI sustains above this 70 marks, and when RSI sustain above this 70 mark, though people call it overbought, I call it a very high momentum zone, and this is the zone where we have very uninterrupted clean rallies. You can see in the past, whenever RSI has sustained in weekly time frame, sustained above 70, you had very good clean rallies. Clean rallies means you don't have to bear about, like every intraday buy is a dip almost, and market goes this way, right? So this is about Nifty. Now, if I'm talking about Nifty Bank in the same chart, Nifty Bank had, if I look at a daily chart, it had a kind of I would say, just a second, it had a kind of a flag pattern, then it broke out. Yesterday was a kind of shakeout day, but yes, we have to see if it sustains above this 46,000. I'm yet not having a great clear view about Bank Nifty, to be honest. Okay, but if we see that IT has been picking up, the pharma has been picking up, and obviously Reliance, so there is quite a good hope that Nifty can continue this rally. The thing that we discussed last time when we were discussing this similar format, that there was a rounding bottom in the weekly time frame breakout in the Nifty mid cap, and the obvious outlook was 40,661. So I think we had this discussion 4 weeks back. Since then, it has been 6-7% rally in the CNX mid cap and CNX and Nifty small cap. Okay, just a second. Nifty small cap 100, right? So Nifty small cap was expected to move towards this 12,500, and it has in the last 4 weeks. You can see it has moved up 7-8%. So all has played according to our expectation. Now, from here, right? I would like to show you an important chart. This is the Dow Jones chart, and all these lines that you see, these are the Fed policy dates that are marked for 2000. For it was I had marked in 2022, so dates are marked till 2023 end.
I think on somehow the July date got missing, but otherwise. But what I can see after 9 months of 8 months of consolidation, the Dow Jones has broken out, and Dow Jones has broken out and sustaining. We have seen that yesterday the data points of manufacturing, the industrial production in USA were pretty weak, and we have also seen that June inflation data was quite weak in USA. So market somehow is hoping that the rate hike cycle may be over, and immediately there is a possibility that Dow Jones can run up to its all-time high, which is 6-7% move here. Another important point, the last chart that I will last of the two charts that I will uh, discuss is the DXY chart, right? A dollar index, if you can see, if I go to the weekly chart after many weeks, just a second, I have dollar index chart already plotted. I will show this. So after many weeks, 100 has been breached, and you can see it went to 99.5. It is trying to go above again towards 100.8, but it seems that there is a good possibility that it may stay below this 100.8. So if this happens, there is good possibility that market will actually uh, continue to rally. But there is one important aspect, and that is the election that we have in July, in sorry, in April 2024. And what I have seen, if I go to the Nifty chart and I go to the monthly chart of Nifty, what I have seen every pre-election year, every see this was 2019, this was 2014 pre-election. Sorry, this was 2013, this was 2019, this was 2000. Obviously, this was global financial crisis 2008. But whatever be the year, this was 2004. So every if I go back to the history also, I will see every pre-election year has seen generally 8 to 20% correction. I'm quite confused that the market is looking so bullish, and every pre-election year we having been seen for last 30 years that there has been 8 to 20% correction. So how this time it will be different. Charts are saying very bullish, trust me, but I'm a bit confused that how things will be uh, doing this time. Okay. And finally, one point I just wanted to show here is the India VIX. शुरुदीप भाई चार्ट चार्ट शेयरिंग नहीं है, खत्म हो गया. Take second, sir. Last point. Uh, so this was that time I was sharing this chart. This was the dollar index chart. The dollar index had fallen. Just to recapitulate, this was the dollar index chart, and this was the Dow Jones Not chart. able to see the charts. चार्ट शेयर करिए शुरुदीप दा. एक second, sir. I think now it is visible, right? It is visible, sir? Yes. Yes. So that time we were discussing the Dow Jones chart here. Just a second, give me a moment. Yes. So that time I was showing earlier this Dow Jones chart, and I said about this breakout could go to 36,830, and the dollar index I had already shown here, it had fallen. Now I am going to a different tab and sharing this one. So last point that I want to make is that as we have seen that the VIX is below 12 for quite a number of weeks, right? VIX is below 12.
I think, given that every pre-election year we have seen some kind of massive correction because people try to factor in the election risk, and this year it is going to be a quite a heated election, not unlike 2019, because this time the opposite sides are, I think, are little bit better evenly matched. So I think right now, it has been a market for investor, but somehow VIX will pick up and it will become very good market for option traders also once VIX sustains about 12 and goes towards 18, 20. All over from my side. Sorry, I missed the chart twice, but I think uh, you got the message that I wanted to convey. Thank अरे you, sir. सूर्यदीप दा, शाहरुख खान ने बहुत अच्छा डायलॉग मारा था, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। और ये शेयर बाजार इतना बड़ा शहर है, यहाँ दो चार चार्ट मिस हो जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट कम्स बैक अगेन एंड अगेन, है ना? डोंट वरी। और परफेक्ट एनालिसिस, मजा आया। कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छा क्लैरिटी आया। बट एक बात सीधा सिंपल बात बताओ, तेजी खेलना है कि नहीं खेलना है अभी? क्योंकि अभी जितने हमारे यूट्यूब में लर्नर्स है वो मुझसे यही पूछ रहे हैं कि सर तेजी खेलने की नहीं खेले, इतना एनालिसिस करने के बाद खेलना है? म्यूट है आप शौर्यदीप भाई, म्यूट है, म्यूट है। तेजी खेलना ही है सर। बस तेजी ठीक है, खेल बात तेजी खत्म होगी। खेल तेजी खेलना है, अब कैसे खेलना है उसका चर्चा करेंगे चेतन भाई और अभिजीत जी से और सनंदो से, क्योंकि सनंदो उल्टा उल्टा गेम में बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको पता लग जाता है कि रिवर्सल कब आने वाला है। तो उनसे लास्ट में सीखेंगे कि कॉशियसली तेजी कैसे खेलनी है ना? तो चेतन भाई, ऑप्शंस ट्रेडिंग, आई थिंक तेजी अगर खेलना हो तो अलग अलग तरीके हैं उसको खेलने के। और मंदी खेलना हो तो भी अलग अलग तरीके हैं, कुछ कॉमन तरीके भी हैं। और जिसको कुछ ना तेजी खेलना है ना मंदी खेलना है, फिर भी ऑप्शन से पैसा बनाना है, उनके भी तरीके हैं। और आप वो तरीकों के मास्टर हैं। तो बताइए क्या करना चाहिए अभी? म्यूट, म्यूट। यस विवेक भाई, सुन पा रहे हो? गुड। तो शोरोदीप सर ने पूरा एक जिस्ट बताया। इन द जिस्ट लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हो गया, राइट? लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट सस्टेन हो गया। हाँ और 18900 उन्होंने बोला ट्रिगर पॉइंट है। हाँ। तो 18900 के ऊपर उनका टारगेट आ रहा है 22,000 लॉन्ग टर्म में। तो अभी 19,800 900 में निफ्टी है। अब बरोबर ये है। जो जर्नी जो शोरोदीप भाई बता रहे, ये पूरा एक लॉन्ग टर्म जर्नी है 22,000 तक। और हो सकता है कि ये इलेक्शंस में बाद या पहले, व्हेनेवर इफ इट्स अ स्टेबल गवर्नमेंट, बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं हुआ तो धीरे धीरे करके होगा। सो हैविंग सेड दैट, ये जो आप मूवमेंट देख रहे हो, ये जो बढ़ बढ़ के या जो मोमेंटम वाला मूवमेंट, ये कहीं ना कहीं अब रुकने वाला है, ये चलेगा नहीं। अब ये मोमेंटम जब रुकेगा तब हो सकता है दो टाइप के करेक्शंस आएंगे, एक है प्राइस करेक्शन या एक है टाइम करेक्शन। तो 22,000 जाना है, 18,900 नहीं तोड़ना है। इट्स अ गिवन फैक्ट, वी ऑल नो दैट मार्केट गोज इन अ हायर ट्रेजेक्टरी। लेकिन साथ साथ बुल मार्केट का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है वीक हैंड्स को आउट करना, जो हिंदी में अपने बोलते हैं माल झड़वाना। ये वाली जो पर्टिकुलर रैली है, ये शायद हिस्ट्री में इंडियन निफ्टी में अगर आप देखोगे, ये शायद 4 महीने के ऊपर हो गया है। whatever you have taken say on the benchmark, और आपने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया है 2 वीक के लो के आसपास, ट्रिगर नहीं हुआ है, तो आप विशियस बुल रन देखोगे तो 2020 की जो विशियस बुल रन है, जहां निफ्टी 7,500 से लेके 22,000 गया बहुत क्विकली 1.5 साल में, लेकिन वहां पे भी पुल बैक्स आ रहे थे। सो नो डाउट यू प्ले ऑन द लॉन्ग साइड, आराम से खेलना है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलने पर ही।
कूद के नहीं लेना है कि आज 19,800 है, मेरे को आज ही ये लग रहा है बड़ा ब्रेकआउट लग रहा है, कूद के नहीं लेना. वेट, देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी, मैटर ऑफ टाइम है. ऑलरेडी हिस्ट्री के हिसाब से अपने बहुत ज्यादा ओवरबॉट शॉर्ट टर्म में हो गए. मतलब नहीं है कि मार्केट नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर जाना ही है अगर 18,900 नहीं टूट रहा है, लेकिन देयर विल बी sharp corrections where it will trigger your stop loss. I cannot predict कहां पे होगा. So क्या मेरे को मार्केट में नहीं खेलना है? खेलना है, लेकिन से अगर मेरी फ्यूचर की पोजीशंस हो या मेरी पोजीशंस हो, I have to buy a insurance, a put option against my long positions in the market. अगर मैं खाली ऑप्शंस कर रहा हूं तो मेरे को नेकेड ऑप्शंस में कॉल बाय नहीं करना, मेरे को स्प्रेड ट्रेड्स लेना है, बुल कॉल स्प्रेड लेना है. अगर मेरे को टारगेट्स लग रहा है कि मेरा इसके 20,000 के आसपास है, तो आई कैन टेक अ बटरफ्लाई ऑल्सो वेयर आई फील दैट रेंज इज गोइंग टू स्टेबलाइज. सेकेंड फैक्टर, ऑप्शन, ये जो लो विक्स ने शौरदीप दा ने बात की, हमने विवेक भाई एक वीडियो बनाया था गामा हल्क का, और अभी गामा हल्क सुपर्ब चल रहा है क्योंकि हर एक एक्सपायरी में वी शेप या डब्ल्यू शेप मूवमेंट आ रही है. सो एज एन ऑप्शन बायर, कॉल एंड पुट बायर, दोनों आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है इंट्राडे में पैसा बनाने का. आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतने लो विक्स में बहुत बढ़िया रहता है अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो, राइट. तो as if you're playing positional, you have some positional trades, please take some hedges. Why? Because any day markets can give you a deep correction. The longer it takes to give you a shallow correction, the more steeper will be the correction in the short run. अगर ये 20,000 से करेक्ट करेगा तो 19,200, 300, 400 और स्टीप होगा और बहुत क्विक टाइम में आएगा. Because if you check history, when the market is not giving you a shallow correction, whenever it gives, the correction is very steep, because everybody else is when bullish. So when the bearishness comes, it surprises everybody. So आप प्लीज तेजी खेलो, लेकिन हेज के साथ. दूसरा, the wix is so low, on the expiry day there is a gamma hulk option buying opportunity which you should not miss. There will be these opportunities. Why? Because the premiums are very low. तो ये दो स्ट्रैटेजी में विवेक भाई मैं आपको बोलूंगा फोकस करिए, and it makes more sense. But the right time to build up bigger positions would be definitely on a corrections, not at this level. Even if I assume 22,000 is a decent call. And Shaurodeep sir ने जो बोला elections, that's a very fair call, because you have the state elections which are coming up in the month of December, January. तो उसके नेशनल इलेक्शंस के पहले स्टेट इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आपका कोई फ्रंट बनता है. तो जैसे अब क्लियरली दिख रहा है, दो फ्रंट बन रहे हैं which will have 80% of the voters in the past election. So that risk will probably get start discounting after 15th August. उसके पहले corrections are overdue, there is no question. Bull market is on, no question. लेकिन सब जगह से आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा. तो आइडियली 19,350, 19,400 निफ्टी का अगर मैं लेवल देखता हूं, वहां पे एक बार करेक्शन मार्केट करना चाहिए within the next 2-3 weeks, even if it goes to 20,000. तो वो लेवल में जब मार्केट आता है, अगर सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स ले रहा है, दैट इज अ गुड टाइम इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड टू बिल्ड अप योर पोजीशन. लेकिन नॉट एट दिस जंक्चर, नॉट कंफर्टेबल. बट इफ यू आर रनिंग अ पोजीशन और आप प्रॉफिट में हो, आप बुक नहीं करना चाहते हो, आप हेज खरीद लीजिए पुट ऑप्शन का, so that in case if the market goes down 400-500 points, your put option gives you the protection of the
fall in the market against your long open position. Yes, Vivek bhai, अरे thank you. चेतन भाई, इंट्राडे का थोड़ा बताइए। अभी मार्केट का ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना समझ में आ गया है कि थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है फेवरेबल ना हो। इंट्राडे में करेक्ट, कैसे पैसा बनाए ऑप्शंस में ट्रेड करके? बहुत सिंपल है विवेक भाई। ऑप्शन बायर, लो विक्स मींस ऑप्शन बायर हैज एन एडवांटेज। और ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा एडवांटेज एक्सपायरी डे में जब रहता है कि जब उसके मूवमेंट उसके फेवर में आती है, और उसका जो मल्टीप्लायर इंपैक्ट आता है ऑप्शन का, जिसको अपने गामा हाइक बोलते हैं। तो इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, आप बहुत जल्दी से पोजीशन बनाइए जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऑप्शन डबल ट्रिपल हो रहा है, थोड़ा बुक करके ट्रेल करते जाइए। अगर आप ऑप्शन सेलर है विवेक भाई, एक खाली मेरा सिंपल रूल है, अंडरस्टैंडिंग है, earlier you get into a position in an option seller, the more you have a chance of being profitable. तो जितना लेट आप घुसना कोशिश करेंगे ऑप्शन सेलिंग में, उतना आपका फंसने का चांस है when the VIX is low. वेरी इंटरेस्टिंग। चलो अभिजीत दा, लेट्स कम टू यू। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, चेतन भाई टॉक्ड अबाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। कैन यू प्लीज इलैबोरेट हाउ डज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लुक्स लाइक एट दिस मोमेंट? Well, not definitely in favor of the long trades. काफी भाग चुका है बाजार. But then, what is my view and how I look into it? Before I start, I would like to also quote Mr. Shah Rukh Khan, in line with your Shah Rukh Khan quote, कि कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. Which means that a trader always needs to lose, gets his or her stop loss triggered, then only she can or he can make a new high. So losing is a part of this game. Investor ho, trader ho, I like to use the word speculator because they are all in the same thing. Khali time span different hai. So I'll start with risk reward ratio. Definitely not in favor of long trades, because most of these stocks, most of these sectors across different time frames are stretched. We are in a emphatic bull market. I am quite sure कि 20K का केक कटने वाला है. We are just 150, 200 points away from that level. And whenever index comes close to such a psychological level, वो छोड़ता नहीं है. एक बार के लिए तो दिखाई देता है स्क्रीन पे, so that balloon आए, cakes आए, and that kind of a sentimental euphoric. Sorry, you want to add something? Yes, just one thing. Please request है टीवी मीडिया वालों को, केक मत काटेगा। एवरी टाइम आप जब केक काटते हैं मार्केट गंदा करेक्शन देता है। इस बार प्लीज नो केक, नो टी शर्ट, लेट मार्केट बी व्हाट यू। हम लोग सब घर पे अपने केक काट लेंगे, प्लीज डू नॉट। In fact, you should use this as an indicator. When I started my career in 2005 in Bombay, the seniors with whom I used to work, तब के टाइम पे 2005 का बात कर रहा हूँ, if Nifty hits 6K or something, depending on the boldness of 6,000, 7,000 on the front page of Business Standard or ET, depending on the boldness of the font, you could sense, depending on whether a film star is on the front page of ET or not. These are signs that the market is getting complacent. जब तक बाजार complacent / comfortable नहीं होता है, correction नहीं आएगा. I'm quite sure for many weeks, many months, people are saying ये गिरेगा, ये आएगा नीचे, and it's not coming down. ये तभी नीचे आएगा जब सब लोग सोचे कि ये पार्टी, and वो पार्टी के लिए केक बलून का तो जरूरत होता है सर. ठीक है, तो केक काटने दीजिए उनको, बलून, ढोल ढाल जो भी लाना है लाने दीजिए. These are indicators. So I sense that this rally will continue towards 20K or maybe higher. You will see broader markets will get stretched, but signs will come if large cap starts to drop. I am keeping a very close eye on Bank Nifty, banking stocks, especially private sector banks. PSU banks are relatively stronger than private sector banks. Ratio charts at least says that. Financials as well. Stretch sectors which are likely to give a correction when the market corrects: auto, FMCG, consumer durables, real estate, and to some extent pharma. When I say correction, I'm expecting 5 to 8 to max 10% kind of a sectoral correction here. Is it possible? Highly possible. It's going to come. I cannot predict the time. I can anticipate, and we are pretty good at it. As of now, I don't have any signs. Strong signals, confirmations के हाँ इस वीक के लो के नीचे बेच दो, वैसा कोई सेक्टरल साइन अभी तक आया नहीं है. It will come. It cannot hide.
but it's just a matter of time now. Now a trader will always trade. वो तेजी का बाजार हो, मंदी का बाजार हो, कोई भी बाजार ना हो, given a chance to him, वो weekend को भी trade करेगा, given a chance. So a trader will trade, and in this market, a trader will get long opportunities as well as short opportunities. There's no doubt about it, because we are seeing stocks falling quite sharply for 3-4 days, bouncing back like crazy also. By the way, there's another term that we should discuss: index management. Excellent. अगर कल इन्फोसिस का दिन था 3.5% हैंडल द निफ्टी वेल, टुडे आईटीसी का दिन था. इफ यू सी द मूव इन आईटीसी फर्स्ट हाफ ऑफ द डे एंड सेकेंड हाफ, इट्स क्रेजी. It's just crazy. Ye toota, and then, like, just when the time was right for it to come and support the index, Reliance also supported it well. So sectoral rotation is beautiful. If you see for the last 2 weeks, metals and IT, or I would say IT and metals, have come up and done what financials, banks, to some extent auto, are slowing down. In Nifty terms, they are slowing down. They might be going up, but in Nifty terms, they're slowing down. Nifty itself is also slowing down in terms of gold terms. You'll see gold is bouncing back. Nifty is holding strong in terms of DXY. So, bottom line is, by the way, another thing before I go to the bottom line. In our live classes, we take live classes quite frequently every week. वो फोमो बहुत दिख रहा है. Our students are asking a lot of questions. Sir, फोमो हो रहा है, फोमो हो रहा है. इसका मतलब they are not able to handle their emotions. I'm sure you will also get a lot of questions in these lines. These indications are classic. These indications are classic that FOMO is much more. They feel like ये हाथ से, the bus is out and all. And यही आसपास कहीं पे top बनेगा. Do we have the top? No. Are we close to the top? I sense so. I can sense it. Do I have confirmation of the top? No. What will I do once I get the confirmation? I'm going to, short left, right, and center. There's no second thoughts about it. And the fall will be sharp. Depending on the monthly charts, whatever I see, when the fall comes, the fall will be sharp. Will it be led to the global events or domestic events? That I don't know, and I don't even care. Market को मसाला चाहिए ऊपर जाने के लिए, market को मसाला चाहिए नीचे. As in terms of price, it will come down. So I would say that traders will trade, take care of your risk management, and try to do as many hit and run trades. Hit and run trades मतलब लिया थोड़ा चला दे दिया. You don't want to carry a lot of positions. From an investor's point of view, not the time to pile up in your investments right now. In fact, it's not a bad time if you are auto heavy, pharma heavy, real estate heavy, etc. It's not a bad time to take some incremental profits. जो आपको profits ऊपर की तरफ दिख रहा है. You've put in some money, it has grown something. If you're getting that ऊपर का cream, if you take it out, wait for lower levels, you'll 100% get it. We should do these kind of live at least once a month. And when the fall comes, I would love to extend the talks that I'm having today. So careful, cautious for an investor point of view. A trader तो trader रहेगा, उसको बोल के कोई फायदा नहीं. He will trade. वो किसी का नहीं सुनेगा, वो अपना ही करेगा जो करना उसको. वैसे I have a meter, sentiment meter called FIL meter. It's a father-in-law meter where, when my father-in-law starts recommending me कि कल तो मार्केट तेजी होने वाला है, मतलब मार्केट टॉप हो रहा है. When my father-in-law is saying that अब तो गया मार्केट, कुछ नहीं होगा, मतलब मार्केट बॉटम हो गया. And these are classic. Yeah. Trust me, these are classic indicators. Technical indicators say bhi, they are supreme. I have so many instances in my career. My brother, some friend who's got nothing to do the stock market. Arey Abhijit, bolna ye kharid liya. These are classic indicators. Trust me, and they work all the time. So the sentiment of the market, once it's bullish so much that people do not care, complacent, comfortable, that is when you become contrary. Yes. So, I mean, a lot of people who are hearing us may not be liking us at this moment because contrarian को कोई भी पसंद वैसे भी नहीं करता है, but that is how we are. We are realistic people. We are not bullish or bullish people. We are realistic people. See, I in fact say this in the classes also. I do not want to say something which you want to hear. I don't want to say something which would make you, feel happy. I can say bullish market, a bull market, a 22K, 25K. But what I see, what I sense from my knowledge and past experience, I'm saying it. जब bullish होगा,
emphatic. We will buy when it crashes and it's given. But now I think careful, cautious is the right approach. It may extend for a quarter more. It may easily, but we just have to wait for the right opportunity. I just want to add one more value here because Abhijit, you come on TV, and fortunately, I had an interaction with someone who comes on TV regularly. So I asked the person that इतना तेजी 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 क्यों बोलते हो? I mean offline. He said that यार विवेक तेजी ही conceptually बिकता है. अगर I मेन स्ट्रीम मीडिया में आके मैं मंदी की बात करूंगा ना, तो मीडिया चैनल्स विल स्टॉप कॉलिंग मी बिकॉज यू नो correct. that empirically it is proven that the more you talk teji, the better people would like to stay in front of the screen, in True. front of the TV and talk. तो अब हमारे पास तो मौका है कि हम कॉन्ट्रेरियन बातें कर सकते हैं, तो इसलिए हम कर रहे हैं. एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रेरियन, let's shift the gear to the fifth gear of the discussion, and I'll come back to Avijit Da, but let's listen to Sanando, who is the perfect contrarian because he tracks global markets like in pieces. So let me figure out कि is there any sign of contrarian, और अगर है या आएगा तो किस जोन में आएगा? Thank you. Thank you. First of all, let me elaborate a bit that since the beginning, every trader specializes on something. So I specialized on crisis trading. So I researched on crisis, how crisis happens, how they impact. Along with, I also prepared my model. I think for any trader, best way for risk management or psychology would be to have a plan. And I always focus on catching either the rally from the bottom or the rally from the top. And I can confidently say that because it was a live class, we predicted the bottom. It was 3,500 S&P 500. That day, near it was FOMC. As Shorodip sir pointed out, Federal Open Market Committee, Federal Reserve का मीटिंग हर वक्त इम्पोर्टेंट होता है ग्लोबल मार्केट को समझने के लिए और टू गेट आइडिया. सो ये मैं दिखा सकता हूँ. लेट मी शेयर द स्क्रीन. ये थोड़ा दिखने में डिफरेंट लगेगा. दिस इज माय चार्ट. These are my calls, these circles. So the last circle I can see came in 31st March 2023, and since then the Nifty has been broadly bullish. Just a minute, And Sanando, just a minute. Let the screen sharing be done. Just a minute. Yeah, we can see the screen. By the way, Sanando जो अभी model दिखा रहे हैं आपको, he is part. This model he teaches as part of the TMP program, जहाँ पर हम लोग पांचों एक mentors हैं, और बहुत जबरदस्त मॉडल है, इनका काम करता है. गो फॉर इट सनंदो. जी सर. So this is the buy sell signal. I don't always work on these, but these are good alerts for me to come back to the market. We were having live session during that time. US market S&P 500 made bottom. This was the bottom around 3,500. These candles don't show actual low, but it is close to the 3,500. This is where the actual bottoming happened, and the last leg of the rally has been happening from March. Where if I come back to my Nifty, I'll be able to see the rally has been very smooth since the buy call, and there has been no exit. All my parameters are fully bullish. This is I highlighted in Stockage Social, which I consider as the one of the best, not one of the best social media platform for traders. You can follow me there in Stockage Social, and there I put out a recent post that I'm probably in the minority camp who believes that we are in a recessionary cycle. And everything this model, crisis trading model, I share in my class with TMP students, and everything I share is based on evidence. So based on evidence, I will today once again share of one of my indicators. This is उन लोगों के लिए जो आज हमारे ये कास्ट देख रहे हैं.
दिस इज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट मान सकते हैं इसको, यूएस का इंटरेस्ट रेट है, गवर्नमेंट अगर बोरो करेगा दिस इज द रेट टू, फॉर एग्जांपल टू बोरो 4.73, 2 साल का इंटरेस्ट रेट। दिस इज 10 साल का इंटरेस्ट रेट। ये अगर आप आपके बैंक में जाएंगे, if we go all to our banks, we'll see an electronic board in some banks, and there are interest rates, and we will always find that the longer term interest rate, जो 5 साल का फिक्स डिपॉजिट है, वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करता है। दिस इज नेचुरल स्ट्रक्चर। जब भी ये स्ट्रक्चर चेंज होता है, 10-2 ईयर नेगेटिव बन जाता है 3.76, ये एक इंडिकेशन है कि ये रिसेशनरी साइकिल में हम लोग घुस चुके हैं। और हर रिसेशनरी साइकिल का पहला फेज है यूफोरिया रैली, और वो यूफोरिया रैली ही है जो हम लोग अभी मार्केट में देख रहे हैं। और इसमें मैं रिसेशन की बात कर रहा हूं, बट फिर भी मैं एक बात का वार्निंग दे दूं कि देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन कि ये रैली को यूफोरिया रैली किया जाता है। दिस मेक्स पीपल डाउट देयर ओन कन्विक्शन कि हम लोग, मेरा एनालिसिस सही है कि नहीं। आई हैव सीन दिस ओवर एंड ओवर अगेन, every time the rally will be sharp. Recently the big players, fund managers, are being forced to join this rally. The longer it takes from the first signal 10-2 reversal, the more painful it is, because these big fund managers who are managing billions of dollars, they can always justify to their big investors like Saudi prince or someone why they lost money during the bear phase. They can never explain why they did not make money during the bull phase. So longer it takes, despite knowing all the factors, they will be forced to jump in, and the rally gets longer. So I will not try to forecast how long the rally will go. Next point, coming to one of the successful trader of our time, Mr. Mark Minervini. If I look at his curve of rising, he shares that in his Twitter all the time. Every time before the crash, Mr. Minervini is going 100% cash. This is also important part of my structure, this crisis trading structure. Whenever I come to bond market and I will enjoy the rally. All my students are enjoying the rally. Some of them bought Nasdaq at 840 and still continuing to rally it. So we are having a field day, and we will continue to have a beautiful day as long as this one remains negative. This 10-2 is currently negative. 10 साल का इंटरेस्ट रेट माइनस 2 साल का इंटरेस्ट रेट, जब तक ये नेगेटिव है, बेस्ड ऑन हिस्ट्री वी आर रिलेटिवली सेफ इन दिस यूफोरिया रैली। एक बार ये 10-2 फिर से नॉर्मल हो जाए कार्व, वो आ गया डेंजर टाइम कि अब तुम्हें सही जगह, उसके बाद भी रैली थोड़ा हो सकता है, बट लेट्स नॉट ईट देम। ये 10-2 जब भी फिर से पॉजिटिव हो जाता है, देन माय फोकस बिकम्स सेम एज मिस्टर मिनरविनी, दैट आई विल गो नाउ फुल 100% कैश, and I will wait for the right moment. And right moment for me, I am showing this. I could have shown the normal candle but I used this one, so that's why I am showing this. Once the 10-2 goes to positive territory, I change my chart to weekly chart. This is the Nirmala Sitharaman candle, and this is my model started predicting crash 11,646. These were played, and the exit came around 9375. And as Abhijit sir point out, I also have several beautiful sentiment indicators which help me to get out of that sell trade that we have been doing, and my students will be doing the next time this one changes the course. Using this weekly chart, this is where we are going to close our position. Last time I closed around 8,800 when Nifty was finally dropping. So I'm looking at similar kind of big move, but this rally is very likely, very strong. Weekly chart, daily chart, everywhere, and S&P still has room to go, means global indices can go farther. So definitely it's bullish and further bullish. और जो लोग भी प्रेडिक्ट करेंगे कि फेड रेट इज 5% 6%, or can we have a rally? If the 2007 rally
dot-com bubble rally all happened with Fed rates being higher. So I don't watch at Fed rates or anything. This will be the my spread to go into full cash mode. There are other parts to it. So I guess we'll need longer lectures for that. अरे ये बाहर रास्ते में लाइन लग गई है लोग ऑफिस से निकलने नहीं देंगे, ऐसा मत करो यार। हाँ, सबको तेजी खेलना और आप लोग क्या यहाँ पे कॉशियस कॉशियस लगा रखे हो। अरे कोई जम के कोई तेजी तो घोर खेलिए सर, तेजी में। जब तक ये 10-2 नेगेटिव नहीं हो रहा है एटलीस्ट जम के तेजी खेल सकता है। और इस टाइम पे स्टॉक खेलना चाहिए। क्या रिटर्न दिया है हाँ स्टॉक? क्या क्यों हमेशा इंडेक्स में माथा लगाएंगे हम लोग कि डेरिवेटिव ऑफ चेतन सर का स्ट्रेटजी से रेगुलर इनकम आता रहे, बट स्टॉक सुपर रिटर्न दिया है। यही तो भालो है। ये अच्छा बोला आपने, एक अच्छा पॉजिटिव टोन में बंद किया इसको कि स्टॉक्स पे तो जबरदस्त रिटर्न आ रहा है। आई मीन आई एंड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस फॉर सम टाइम यार, कि ये लाइफ में बहुत कम टाइम ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आपको स्टॉक्स में इतना जबरदस्त मूवमेंट मिल रहा है, और ये तो रुकेगा नहीं। बस इंडिया का स्टॉक्स तो पागलपन की तरह भाग रहा है और भागेगा। नो वन कैन ये स्टॉप देख इट। लीजिए सर, इंडसइंड बैंक क्या चल रहा हाँ, है, ब्यूटीफुल आज फिर से ब्रेक दे रहा है। रुक जाइए कोई देखते भी हैं। मॉडल लीजिए, सिंपल जो भी है, स्टॉक तो दिख रहा है कि फाड़ रहा है ऊपर और पैसा तो बन रहा है। ओके, तो थोड़ा और कॉशियस बात कर लेते हैं। चलो, आई थिंक छोरोदीप आपके पास कुछ है। यस सर, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो चीज़ दिखाया था, ठीक है ना, सो दिस टाइम ऑल्सो आई विल ट्राई टू डबल डाउन ऑन दैट बिकॉज द स्प्रेड्स आर मोर फेवरेबल राइट नाउ। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। So, can you see this screen? Can you see the option chain right now? Nifty option chain. Hello. Can you see the Nifty option chain? I'm not getting the answer. ऑप्शन चेन दिख रहा है सर? यस, थैंक यू अभिजीत। तो मैं ये चीज़ बार बार बोलना चाहता हूँ। लास्ट टाइम में मैंने बोला था कि इफ़ यू आर अ ट्रेडर and if you are thinking of right now there is some liquidity in this June 2024 option, but what I was telling you to buy is this 19,000 का पुट बाई करो, और अगर चाहो तो 16,000 का बेच दो। तो if you do this you will have a spread of maybe 470 rupees, or you will get a buffer for 3,000 rupees. So with a cost of 470 you are getting a protection of 3,000 Nifty. For every 10 lakh of your portfolio you should do this. Below 19,000, if there is an electoral outcome that pushes the market towards 17,000, 16,000, this spread for every 10 lakh of your portfolio. Why 10 lakh? Because right now Nifty is almost 20,000, 50 is the lot. So when you buy this 592, I told this in the last month session also. That time I think the cost was around 650. Right now cost is even lower because Nifty has rallied almost 800 points, so 900 points. So for every 10 lakh of your portfolio, buy this. See, 480 rupees is just 2% of your portfolio. With the 2% cost of your portfolio, you are getting a hedge for 12-13% of fall. ठीक है ना, मतलब 15% of fall, but 2% is the cost, so 12-13% protection you are getting. So आप तेजी खेलो आराम से, but for every 10 lakh of your portfolio, if you do this, you will sleep well. That's it from my side. सही है, सोना बहुत जरूरी है। ये बात तो सही है, सोना विवेक बहुत। भाई बोलो भाई। हमने सबका व्यू तो ले लिया, आपका व्यू बाकी है सर। आप अरे सबके हाँ, सब में आप हंसते हंसते हाँ 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 कर दिए सर। आपका व्यू तो बताइए। अरे हम कोई से डरते थोड़ी ना, हम कोई टीवी वाले थे ना कि व्यू नहीं देंगे अपना, हम देंगे, उसमें क्या है। हम तो रियल ट्रेडर है, ट्रेडिंग करते हैं। सर जी व्यू तो बड़ा सिंपल सा ही है, गणित बैठा रखे हैं अपने जीवन में
कि जब तक निफ्टी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तब तक चुपचाप स्टॉक्स में काम करते रहो, भरपूर पैसा बनेगा और बन भी रहा है, राइट। राइट। और स्टॉक्स से ही एग्जिट करना है। निफ्टी को देख के अगर स्टॉक से एग्जिट करने लग गए तब तो फिर कभी पैसा नहीं बनेगा। लवली लवली। तो मैं तो कोई व्यू नहीं बनाऊंगा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, क्योंकि ये मार्केट नहीं है ना निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू बनाने का। उस व्यू के चक्कर में हम लोग बड़ा अपॉर्चुनिटी जो स्टॉक दे रहे हैं वो मिस कर जाएंगे। लवली। एक दिन निफ्टी 100 पॉइंट गिरेगा नहीं, ठीक है, स्टॉक भी गिरेंगे, 3, 4, 5% गिरेंगे, बट जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो गए वो उतना नहीं गिरेंगे। और वो जो मौका देता है उस समय स्ट्रॉन्ग स्टॉक वापस घुसने के लिए, वो फिर मौका वापस नहीं मिलता है। बहुत ही एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए ना, शिप बिल्डिंग सेक्टर, जो सेक्टर रोटेशन डे 1 से हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं कि गजब मूवमेंट है। निफ्टी 50 पॉइंट गिरता नहीं है, 2-3% वो स्टॉक करेक्ट करते हैं, उससे डरना क्यों है? स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो उसको रैली में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। लवली लवली। तो सर मेरा काम नहीं है सर निफ्टी बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट करना। हम थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में एक्टिव होने के लिए बोल देता है निफ्टी ये बैंक निफ्टी है, बट हम कुछ ट्रेड नहीं करता निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि मतलब नहीं है वो ट्रेड करके। ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हैं जो मेरी टीम करती है, बट मैं तो पर्सनली स्टॉक्स में करता हूँ बिकॉज आई जस्ट लव दिस होल स्टॉक इकोसिस्टम इन इंडिया। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो सर यही करते हैं ना हम लोग। देखिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम से हम लोग पांचों हैं, तो हम लोग अपने अपने स्टाइल और स्ट्रैटेजीज को लोगों को सिखाते हैं, और उसके बाद जिसको जो सूट कर जाए वो पिक कर लो और उसके ऊपर और आगे बढ़ जाओ। तो दैट इज समथिंग विच आई एक्चुअली वांटेड टू इन्फॉर्म ऑल आवर लर्नर्स कि ये इंडिया का नहीं, ये दुनिया का एक यूनिक मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां 5 मेंटर्स हैं और मल्टी एसेट मेंटरशिप, और पांचों के यूनिक स्टाइल है। लेकिन फाइनली पांचों का ऑब्जेक्टिव ये है कि मार्केट से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होके पैसा बनाना, दैट इज, और वही सिखाते हैं। तो इट्स सो मच फन टू बी अराउंड ऑल 4 ऑफ यू एंड टीच पीपल द राइट वे टू ट्रेड एंड बिल्ड करियर इन मार्केट। Thank you guys for this amazing session. I Thank think you. the message is quite clear that तेजी तो खेलना ही है, but कहीं ना कहीं यहाँ पे हल्का सा स्पेस में cautiousness लाइए। ये don't get carried away with so much euphoria already we are seeing, and I'm sure that पैसा आप ही का है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Thank you. Thank you. Thank you. Good night, everyone. Have a great uh, week and the weekend, and have a great market ahead. Bye.